Recording hasn't started. ठीक है. All right. सभी लोग आ गए. 32 लोग हो चुके हैं. So कुछ तो हमने बोर्ड पे किया था. Now what we'll do it on the screen. Derivations भी है slides में. So let us see if we are able to do it from there. अगर नहीं होगा तो बताइएगा, फिर बोर्ड पे करेंगे. But step by step जैसे बोर्ड पे करते हैं वैसा ही है. So just a quick revision of the genus configuration and what is the benefit of genus configuration, how it is improving the performance of the Doppler log, how it is eliminating errors of different kind. So allow me to share the screen. Let me find out the file first. All right. My screen visible to you all? Yes, sir. Okay. All right. Basic Doppler log का हमने देख लिया था case. This was the formula that we derived for basic Doppler log, in which there was one transducer transmitting at an angle alpha. Then this was the formula. What problem was noticed in this? Chevron, what problem was noticed in the basic Doppler log? Sir, we were only considering linear motion, not vertical motion. Linear नहीं, horizontal बोलेंगे उसको. Yes, horizontal motion. हाँ, linear नहीं बोलेंगे. Linear में तो basically vertical motion भी linear है, horizontal भी linear है, but we'll call it horizontal motion. That means how she is moving parallel to the surface of the earth. So we were taking, very good, you said correct only. We were taking only this motion. We were not considering the vertical motion which is also happening when the ship is moving. And for that, we have redesigned or modified our Doppler log to make it a genus configuration log. So the problem noted with the basic log is on your screen. Very happy that you just gave the right answer. Just to revise, what is the problem with the basic log? Next. Is the genus, God genus.
Looking forward, looking past also, past and future together. So in the Janus configuration log, what happens? There are two sets of transducers, both transmitting the same frequency at the same angle alpha. As you can see in the diagram, in the forward direction, there are two components of motion. Because of V, there is V cos alpha, and because of VV, there is VV sin alpha. Since the ship is going in this direction, so इस point से दूर जा रहा है, aft वाले transducer से aft वाले seabed के point से जहां से reflection हो रही है उससे दूर जा रहा है, इसलिए माइनस साइन, इधर वाले के नजदीक जा रहा है, इसके नजदीक जा रहा है, इसलिए प्लस साइन. So there are two relative motions, both contributing to frequency shift. So what do we do about this? We derive the formula with new set of information that we have. What is that? When we derive, we are going to come to this conclusion, in which we will be taking the difference between two received frequencies from forward and aft. In the basic log, we were taking the difference between transmitted and received frequency, but here we are taking the difference between forward received frequency and aft received frequency. Slight bit of change in the denominator. There is also 4 coming instead of 2. Remaining everything is same. So take a quick look at the derivation. The difference between transmitted and received frequency is due to two motions, one horizontal motion V and the other vertical motion VV. So हमने दोनों के कंपोनेंट को ऐड अप कर दिया. फॉरवर्ड में ये, similarly for aft transducer, the received frequency from aft will differ from the transmitted frequency, which is because of two motions again, horizontal motion V and vertical motion VV. But यहाँ पे माइनस V हो गया. हमने कैलकुलेट किया था ना, FR की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी when the vehicle was going towards the observer, we were taking V. When it was going away, we were taking minus V. Is that correct? Yes, sir. So getting away is minus, coming close is plus. अरे बैटरी पावरलेस हो गया, रुको चार्जिंग में डालने दो. Just 1 second. All right. So this is what we have for aft transducer. Now we take the difference between the two. We do 1 minus 2, equation 1 minus 2, subtracting 2 from 1. LHS को अलग करते हैं, RHS को अलग माइनस करते हैं. So this step you remember, correct? आपने नोट भी किया होगा. What we see when we subtract this LHS and RHS, we see that the FT get cancelled out
and the VV sin alpha get cancelled out. And we are remaining with this only. Resolving it further, we get the formula. We calculate finally the value of V. So everybody okay with this? Yes, sir. Good. So going forward, what is the benefit? What is the conclusion? What did we achieve by Janus configuration? We saw that the vertical component now is getting cancelled out in Janus configuration. It does not have impact on the displayed speed, indicated speed, any kind of vertical motion, no effect. It is independent of the heaving of the ship. Apart from this achievement that we are cancelling out the heaving motion, there are other benefits also that this log provides. It minimizes the error due to rolling, pitching, trim, and something called side lobe जो आगे आएगा, अभी clear नहीं होगा. But rolling हम जानते हैं what is rolling about the ship, what is pitching, and the trim. So we'll talk about them in detail. So the Janus configuration makes the Doppler log very accurate kind of speed measurement system, not getting affected by many of the factors. One thing to note here is that the reflection of the wave is taking from the seabed. And so frequency shift is happening with respect to seabed, and we are measuring the speed with respect to seabed only. What we call speed over ground is technically also called bottom track or ground track. The speed over ground in terms of the SDMEs. SDME क्या है? Anyone? Speed distance measuring Ship equipment. Very good. Speed and distance measuring equipment. तो जब हम उसके मैनुअल्स वगैरह को पढ़ते हैं तो बॉटम ट्रैक और वाटर ट्रैक का रेफरेंस आता है. So the term that is generally used on ship is bottom track, ground track, but we mariners very often use SOG, STW, speed over ground, speed through water. So when we are measuring the speed with reference to the seabed, ground track or bottom track, when we are measuring the speed with respect to the water, water track. The primary purpose of the Doppler log is to provide speed over ground. EM log already provides a speed through water, but in certain conditions, the Doppler log can also provide speed through water. That means water track. We will see in what condition and how it is doing that. But Doppler log provides SOG and STW both. EM log only water track or speed through water. Now, as you can see in the second point here, what happens when the ship is going in deep waters where the depth is more than 200 meters? The signal which is going, by the time it reaches back, it is dying out. There is no strength in the signal
that can be received by the transducer. It is not reaching the transducer in a right manner. So जब FR नहीं मिलेगा तो कैलकुलेशन कैसे होगी? In that case, what happens? There is layer of water about 10 to 30 meters from the surface, where the layer of the water is having different kind of density, temperatures and all that. So water in the upper part is different little, but this one provides a different kind of layer, more dense layer, because of temperature, which is low. You know, when we go under the sea, the sunlight is not reaching there, and so the water is normally very cold. The temperature is very less. That begins to happen from somewhere 10-20 meters down. In this case, what happens? The signal will get reflected from this surface also, from here itself. Small signal getting reflected back from this layer of water. So now is the speed being measured with respect to the water layer? Supposing the speed of the ship was 10 knots, actual with respect to ground. But there is also 1 knot current. Also there is 1 knot current which is moving in this direction. So with respect to the water, what is the speed that will be measured? Yes. Yes, any idea? Can you hear me? Yes, sir, you are right. So are you thinking of replying, or you have some doubt what to say? The ship was doing 10 knots of speed with respect to ground. Now she is measuring the speed with respect to the water. This layer of water itself is moving at 1 knot in the same direction of the ship. Then what is the relative motion? Are we not measuring the speed with respect to the point where the reflection is taking place from the water? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? No, sir. नहीं, sir. बताओ. Come again? No, sir. No, sir. नहीं समझ. Yes या no? क्या बोले? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं समझ आया, No, sir. sir. No, sir. No, sir. एक बार ठीक है. समझा दीजिए. Okay. No, sir. Ship is moving like this at 10 knots. सीबेड के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है. यहां से इसके स्पीड जो है दैट इज 10 नॉट्स. ग्राउंड से 10 नॉट्स पे चल रही. अगर मैंने एक यहाँ पे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट रख दिया जो भी 10 नॉट से चल रही है, तो 1 घंटे में ये जहाज 10 नॉट आगे चली जाएगी या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट था वो भी 10 नॉट से चल रहा था, तो वो भी 10 नॉट आगे चला जाएगा या नहीं? Yes, sir. मतलब Yes, यहाँ sir. पे जहाँ पे ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट था वो अभी भी साइड में ही रहेगा. दोनों एक ही स्पीड से चल रहे थे. Yes, sir. तो अगर अब हम देखें कि इसके रेस्पेक्ट में स्पीड क्या रही इसकी,
1 घंटे बाद जहाँ था अभी भी 1 घंटे बाद वहीं पे है, तो उसके Zero. फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या स्पीड हुई? Zero, sir. Zero. So 0. Exactly, that is what I was trying to say. Now same case once again. Ship is moving at 10 knots. She is moving with respect to the seabed at 10 knots. And there is this floating object which is the water. Water is moving at 2 knots. तो ये जहाज जो है आगे चला जाएगा 10 माइल 1 घंटे में, Yes, जाएगा sir. या हाँ, नहीं? sir. लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट था ये 2 माइल आगे चला जाएगा या नहीं? हाँ, sir. तो इस पॉइंट से जहाज कितना आगे निकल जाएगा? जो यहाँ पे 8 थी knots. पहले, 8 समझ गए? miles. 8 miles. 8 miles. That's exactly what we are saying. So here, with respect to this, if we are measuring, we are going to get 8 knots, right? With respect to ground, 10, but with respect to water, 8. Is that correct or not? Yes, sir. So did we understand? Yes, sir. जो पुरानी वाली केस जो हम बात कर रहे थे कि स्पीड थ्रू वाटर मिलने लगता है, जो हमने बात किया था, जहां से शुरुआत करी थी कि द शिप इज बिगिनिंग टू टेक द रेफरेंस फ्रॉम हेयर, यहां से रिफ्लेक्शन शुरू होती है, सी बेड नीचे है बट लेयर ऑफ वाटर इज समवेयर हेयर एंड द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम दिस पॉइंट. तो अगर जहाज एक्चुअली चल रहा होगा 10 नॉट पे और ये चल रहा है 2 नॉट पे, तो इस पॉइंट से कितना आगे जहाज निकल जाएगा 1 घंटे में? 8 knots. 8. तो स्पीड थ्रू वाटर मिल गया ना? हाँ, sir. In Yes, the sir. water, in the water, with respect to water, she has done only 8 miles. With respect to ground, she has done 10, but with respect to water, she has done only 8. क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ से है, इसी पॉइंट से कितना आगे निकल गया होगा? तो 8 माइल निकल गया होगा. Understood? Yes, sir. Good. So this happens when the depth is more and the received signal cannot be received properly. The reflected energy cannot be received properly, which can be processed for speed calculation. Generally, this happens when the depth is more than 200 meters. और इसी के लिए IMO says कि डॉपलर लॉ को कम से कम 200 मीटर तो काम करना चाहिए, स्पीड ओवर ग्राउंड बताना चाहिए. Remember that IMO says sets up the minimum standard for any device. तो यहाँ डॉपलर लॉ के लिए उन्होंने कहा है कि 200 मीटर की डेप्थ तक डॉपलर लॉ अच्छा से स्पीड ओवर ग्राउंड बताए, उसके बाद नहीं बताता है तो कोई बात. तो उस केस में क्या हो जाएगा? It can switch on automatically to this mode. जब सिग्नल मिलनी बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये वाटर ट्रैक मोड में आ जाएगा और देयर कैन बी अ स्विच प्रोवाइडेड व्हेन वी कैन चेंज इट. बट इस स्विच से ये काम नहीं होगा इफ यू आर सेलिंग लेट अस से 25 मीटर्स डेप्थ ऑफ वाटर, क्योंकि वहां पे बॉटम से बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा डेप्थ कम है. This can happen when we are in deeper water like 120, 130, 150 meters, or automatically it will change to 200 meters when the depth is more than 200 meters. Are we good? Yes, sir. कहानी सुनाओ मुझको, क्या समझे? सर अगर मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, नीचे डेप्थ ज्यादा है, हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली 200 मीटर में स्विच हो जाएगा. अगर डिस्टेंस उससे कम है तो उसको या तो एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली या फिर वो रीड कर लेगा, ऑटो में भी रहेगा डॉपलर लॉ. हाँ, बट व्हाट इज द डिफरेंस? ये स्विचिंग हो रही है तो किस चीज के बीच में स्विचिंग हो रही है?
स्विचिंग सर डॉपलर लॉग और ईएम लॉग के बीच में ना नहीं. ना. So speed over ground, speed over water. यस, स्पीड ओवर ग्राउंड और स्पीड थ्रू वाटर के बीच में स्विचिंग हो रही है. ईएम लॉग तो अलग पड़ा हुआ है, वो तो अलग चीज है, उसको तो पढ़ के हमने साइड कर दिया. अभी तो हम डॉपलर लॉग बात कर रहे हैं ना. हाँ, रिमेंबर हमने क्या कहा है कि डॉपलर लॉग स्पीड ओवर ग्राउंड और स्पीड थ्रू वाटर दोनों दे सकता है. भाई कब दे सकता है? तो नॉर्मल केस में जब स्पीड ओवर depth ग्राउंड ज्यादा. देता है, लेकिन डेप्थ ज्यादा हो जाएगी, सिग्नल वहां से वापस नहीं आएगा प्रॉपर, तो वाटर ट्रैक देने लगेगा, स्पीड थ्रू वाटर देने लगेगा. अंडरस्टूड? यस सर. Okay. Out at sea, when you are sailing for collision avoidance, what you should be using? Which kind of speed? Speed through water. Speed through Speed water. through water sir. Yes, very good. So, if you are sailing out and you are not having EM log, only the Doppler log, out at sea, where will you switch it to? In what mode will you switch the Doppler log to? Speed through water. Yes, you will use this function and switch it to speed through water mode. Now you are calculating ETA. You want to calculate ETA, you have to send the noon report and you have to send the ETA. What will you do? Speed over ground. Speed through ground. Speed over ground. Through ground नहीं. Through ground होएगा तो भीतर घुस जाएंगे हम, अर्थ के भीतर घुस जाएंगे. So speed over ground. Yes. So this is about the speed through water and speed over ground. Now suppose, now that we know that the ship is transmitting forward and aft, so when the ship moves forward at the speed of v, we get the speed. ये 10 knot, 12 knot, 15 knot, 8 knot जो भी कर रहा है. This we are using in coastal waters because we have to have the speed over ground for coastal navigation, जहां मैं अपनी movement fixed object से चेक करता हूं, मैं बॉय से टकराऊंगा या नहीं, कहीं शैलो पैच पे तो नहीं चला जाऊं. So now what is happening? There is this jetty and your ship is berthing. She is going for berth. Is she going to move forward or is she going to move in athwartship direction? Athwartship is sideways movement. So which one she is going to do? What kind of motion she is going to do when she is berthing or unberthing? Sir, athwartship. Athwartship. Earthworship, sir. Yes, but transmission was happening forward and aft, and the speed was measured whether going forward or going aft, minus v and v. तो यहाँ पे डॉपलर लॉग हमें ये स्पीड दे पाएगा क्या? अथवार्टशिप स्पीड दे पाएगा? नहीं दे. लेकिन हमें चाहिए तो, अगर हम जरूरत से ज्यादा तेजी से चले गए तो जेटी पे ठोक देंगे या नहीं? मुझको कंट्रोल चाहिए ना अपने स्पीड का. आई वांट टू फाइंड आउट कि भाई एट व्हाट स्पीड आई एम मूविंग. Yes, sir. सो हाउ डू वी फाइंड आउट? तो जेनस कॉन्फ़िगरेशन के डॉपलर लॉग में हम थोड़ा और इंट्रोडक्शन कर देते हैं, एक और मॉडिफिकेशन कर देते हैं. क्या करते हैं? तो हमारे पास एक फॉरवर्ड आफ्ट का तो ट्रांसड्यूसर था ही, हम एक स्टारबोर्ड पोर्ट में भी एक सेट लगा देते हैं. चार ट्रांसड्यूसर हो गए, सेट ऑफ ट्रांसड्यूसर. एक फॉरवर्ड में ट्रांसमिशन रिसेप्शन, एक आफ्ट में ट्रांसमिशन रिसेप्शन, एक स्टारबोर्ड साइड में, एक पोर्ट साइड. सो नाउ वी हैव 4 ट्रांसड्यूसर्स.
When the ship is moving in this direction, will there be FRS, frequency received from starboard side? Will there be frequency received from port side? तो frequency मिलेगी या नहीं? Yes, sir. साइडवेज मूवमेंट होगी तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगा। और जैसे हम मेजर कर रहे थे, जैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे फॉरवर्ड आफ्ट स्पीड को, जो फार्मूला निकाला था उसी फार्मूले को लगा के हम अथवार्ड शिप स्पीड भी निकाल सकते हैं। करेक्ट? Yes, sir. So this is called dual axis Doppler log, because we not only have on the longitudinal axis, but we also have on transverse axis. Two transducers on the forward aft and direction transmitting in the direction of forward and aft, and the other set transmitting in athwart ship direction. So दो एक्सिस हो गया या नहीं? एक longitudinal fore and aft पे, एक transverse sideways, दो एक्सिस हो गया या नहीं? Yes, sir. So this one is known as dual axis Doppler log. Read the slide and see if you understand what you're reading. Are we good? Yes, sir. Next, this is the 4-element transducer. जैसे अशोक स्तंभ में 4 शेर होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन दिखता 3 है, तो साइड में और एक सामने दिखता है, पीछे वाला दिखता नहीं। वैसे ही यहाँ पे नीचे में एक दूसरा भी ट्रांसड्यूसर है पीछे की तरफ जो दिखने का। तो यहाँ पे एक ट्रांसमिशन ये होती है, एक फॉरवर्ड आफ्ट में दूसरी होती है। सो डब्बा एक ही लगता है, लेकिन डब्बे में 4 ट्रांसड्यूसर, 4 ट्रांसड्यूसर हैं, 2 का सेट, एक सेट फॉरवर्ड आफ्ट, एक सेट पोर्ट स्टार्बोर्ड। Special function of this is to give us sideways motion or athwart ship speed of the ship, and this is specially required when we are doing berthing and berthing operations. We might also want to see if we are heading on a course and there is a forward speed, there is sideways speed also. So we can find out effective speed as well. दोनों से हम पता कर सकते हैं। अगर एक जहाज चल रही सामने 10 नॉट से, फॉरवर्ड आफ्ट स्पीड में 10 नॉट बता रहा है और साइडवेज स्पीड में इतना भी बता रहा है 2 नॉट, ये साइडवेज भी चल रहा है ये 2 नॉट, तो कैन वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द टू? Yes, sir. So we can find out what is the resultant speed. If we have both the speeds available, हम उसका रिजॉल्व कर सकते हैं। दो कंपोनेंट मिल रहा है तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे। जैसे हमने V थी तो V का कंपोनेंट निकाला था, यहाँ पे कंपोनेंट अवेलेबल है तो रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो सर कंटिन्यूअसली चारों करते रहते हैं क्या, ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल जब भी Yes. डॉपलर लॉग चालू रहता है कंटिन्यूअसली? यस, कंटिन्यूअस चलता रहता है और आपके इंडिकेशन में क्लियर कट दिखाना चाहिए। अगर यहाँ पे दिखा रहा है 2 नॉट का स्पीड, तो इसको क्लियर बताना चाहिए कि वेदर इट इज फॉरवर्ड आफ्ट और इट इज पोर्ट स्टारबोर्ड। अगर 2 नॉट दिखा रहा है तो द डिस्प्ले शुड रिमूव दिस एंड इट शुड शो यहाँ पोर्ट स्टारबोर्ड में 2 नॉट की स्पीड है। एक तरफ को जाएगा तो 2 नॉट, दूसरी तरफ को जाएगा तो -2 नॉट। सो माइनस प्लस विल डिसाइड कि हम स्टारबोर्ड को माइनस स्पीड दिखा दें, पोर्ट को प्लस स्पीड दिखा दें। जैसे फॉरवर्ड स्पीड को हम प्लस स्पीड दिखाते हैं 10 नॉट, स्टर्न में वेसल जाएगी तो स्पीड माइनस हो जाएगी।
पीछे जाएगी जहाज तो माइनस स्पीड हो जाएगी, सामने जाएगी फॉरवर्ड जाएगी तो प्लस स्पीड होगी. Same way, the port starboard can also be converted into positive and negative sign. The indication should be very, very clear whether you are reading forward of speed or you are reading port starboard speed. So, अगर single display है तो यहाँ पे clear cut लिखा होना चाहिए forward of speed या any indication which indicates that forward of speed है. If we switch it to port starboard, अगर single screen है तो when we switch it to port starboard speed, तो यहाँ पे clear cut indication आना चाहिए कि this is port starboard speed. Sir, we have to manually switch this. Yes, you can switch manually. There will be knob provided for this, switch provided for this, or in some cases you may have a split screen display where there is forward aft speed and there is port starboard speed. Forward aft speed is 10 knots and port starboard is 1.5 knots. So there can be both the possibility, या तो manually switch करने का होगा अगर single screen है तो, अगर single display है तो, अगर split screen में है तो एक ही screen में दो पार्ट होंगे, दोनों में अलग अलग स्पीड बताएगा. Are we good? यस सर. तो dual access clear है, क्या चीज होती है? Any questions? Yes, any questions? सर जैसे आर्थवर्ड शिप का मूवमेंट ये अलग दिखा रहा है, तो आर्थवर्ड शिप की कैलकुलेशन अलग होती होगी ना फॉरवर्ड एंड ऑफ मूवमेंट से? हाँ, वो अलग अलग कैलकुलेशन है. तो दो पार्ट होएगा प्रोसेसर में, अलग अलग इनपुट के अलग अलग ये होंगे ना, तो वो अलग अलग, जैसे जैसे मान लो कंप्यूटर में बैठे रहते हो, काम करते हो, वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, पीछे आपने म्यूजिक भी बजा दिया तो गाना भी सुन रहे हो और टाइपिंग भी हो रही है, होता है कि नहीं? हाँ सर. तो दो चीजें प्रोसेस हो रही है ना उसके प्रोसेसर में, उधर गाना भी प्रोसेस हो रहा है, इधर टाइपिंग भी प्रोसेस हो रही है जो आप कीबोर्ड चला रहे हैं. यस सर. तो वैसे ही दोनों दो इनपुट अलग अलग पार्ट में दो अलग अलग इनपुट जा रहा है, दोनों अलग अलग प्रोसेसिंग होती है, अलग अलग डिस्प्ले आते रहते. ठीक है, यस सर. ओके. So next one is what happens. दिमाग लगाओ और बताओ मुझको कि नॉर्मली जहाज को हमने देखा कि ऐसे ट्रांसमिट कर रहा है. It is transmitting at an angle alpha on both the sides. But we will appreciate this that very often the ship is not upright. She is not even keel. Whenever she is sailing, so very often she is having a trim. तो जब ट्रिम होगा तो ट्रांसमिशन इधर को और इधर को हो जाएगी या नहीं? Yes. सर. तो अगर हम देखें तो एंगल जो है पहले जो यहाँ था और यहाँ, और पहले जो यहाँ था यहाँ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ दिख रहा है? कौन सा Yes. ज्यादा हो गया कौन सा कम? ऑरेंज वाला पहले जो अपराइट था तब ज्यादा या ग्रीन कंडीशन में ज्यादा? ग्रीन वाला ज्यादा. So orange was ग्रीन वाला ज्यादा. हम लोग पहले आफ्ट की बात कर रहे हैं. आफ्ट में क्या हुआ? so green वाला ज्यादा हो. ग्रीन वाला ज्यादा हो गया. मतलब यहाँ पे जो ये एंगल क्रिएट हुए थे, मान लो ये बीटा है,
डाउन बाय स्टर्न जो गया उसमें अगर एंगल बीटा है तो उतने ही एंगल से ये बीटा बढ़ जाएगा इधर को, जितना पीछे नीचे हुआ उतना ही ट्रांसमिशन इस तरफ को आ जाएगी, आगे आगे आ जाएगी, करेक्ट और नॉट? Yes. और यहाँ पे ये वाला एंगल कम हो गया, दैट मीन्स दिस विल बिकम अल्फा माइनस बीटा, करेक्ट? एंड आफ्ट में हो जाएगा क्या? अल्फा प्लस बीटा। नहीं समझ में आया? Yes, sir. चलो सर एक बारी और। ओके, डुअल एक्सिस ट्रांसमिशन कैसे होती है? दो एक्सिस हमने देख लिया यहाँ पे कि एक फॉरवर्ड आउट एक्सिस पे है और दूसरा साइडवेज एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस जिसको बोलते हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि जब ट्रिम हो जाएगा जहाज, तो अभी हमने देखा कि एंगल्स को चेंज होते दिख रहे हैं। अगर एंगल चेंज हुआ तो जो पहले हमारे पास रिलेटिव मोशन वाज v cos अल्फा, अब ये फॉरवर्ड में v cos अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा या नहीं? रिलेटिव मोशन चेंज हो जाएगी कि नहीं अगर एंगल चेंज हुआ तो? Yes, sir. और पीछे आफ्ट में दिस विल सेम थिंग विल बिकम पॉजिटिव v cos अल्फा प्लस बीटा। Yes, sir. तो रिलेटिव मोशन चेंज होगी तो एफ आर की वैल्यूज चेंज होगी कि नहीं? एफ आर एफ और एफ आर ए ये दोनों बदली होगा या नहीं? Yes, sir. अगर एफ आर बदली हुआ तो प्रोसेसर की इनपुट जो हमने फॉर्मूला दिया था उसमें वैल्यू अगर बदली होंगी तो डिस्प्ले बदली होगा या नहीं? डिस्प्ले बदली होगा या नहीं? जो हम 10 नॉट्स और 12 नॉट और 15 नॉट दिखा रहे थे स्पीड ओवर ग्राउंड, जब ट्रिम होगी केस तो डिस्प्ले बदल जाएगा या नहीं? Yes, sir. पहले हम दे रहे थे 2+2, अब रिलेटिव मोशन बदल गया तो 2+3 कर दिया हमने, तो रिजल्ट बदली होगा या नहीं? Yes, sir. कितना बदली होगा, कैसे बदली होगा? How will it change? What is the impact of this alpha and beta? So फॉरवर्ड एंड आफ्ट में एंगल चेंज हो जाती है ट्रांसमिशन की when the ship is trimmed. Trim can be either down by head or down by stern. Mostly down by stern हम लोग चलते हैं, down by head कम ही होता है। But this trim definitely is going to change the inputs to the processor. वो जो फॉर्मूला था हमारे सिस्टम में उसमें इनपुट चेंज हो गई, एंगल चेंज हुआ तो रिलेटिव मोशन चेंज हुई, रिलेटिव मोशन चेंज हुआ तो एफ आर की वैल्यू चेंज हो गई, एफ आर की वैल्यू चेंज हो गई तो जो हमारा फॉर्मूला था v इज इक्वल टू एफ आर एफ माइनस एफ आर ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 4ft cos अल्फा। अब तो चेंज हो गया, ये इनपुट्स बदल गए तो डिस्प्ले बदल जाएगा। So how is it going to happen? Supposing the angle of trim is beta. Angle of trim is beta. Then if you see from the horizontal, the angle here has become alpha minus beta, and angle here has become
अल्फा प्लस बीटा, ये by beta it is getting added up here, and by beta it is getting minus from here. So this Sir, is but now we are only considering down by stern only, right? right now we are considering down by stern. We are considering down by stern. When we do it other way around, जो कि अगले स्लाइड में आप देखेंगे, when it goes down by head तो उल्टा हो जाएगा, सामने में अल्फा प्लस Yes. बीटा हो जाएगा, आफ्ट में अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा. You can take a look also. Okay, so here it is down by head. Is it okay then? Yes. Sir. So how is it going to affect the displayed speed? We have to take into account the cos alpha plus beta and cos alpha minus beta. Remember that in the Janus configuration, VV sin alpha को हमने cancel out कर दिया था, कर दिया या नहीं? Yes, sir. तो अब हम उसके वर्टिकल कंपोनेंट को छोड़ देंगे, मालूम है कि इसका कोई काम नहीं होता है. तो now we will work only with the horizontal motion component. So we had FRF minus FT is equal to 2VFT cos alpha by C. Was it or not? पहले जो हम डिराइव कर रहे थे उसमें. But now यहाँ पे cos is no longer only cos alpha, but it is alpha minus beta. Correct? फॉरवर्ड में. और आफ्ट में क्या हो गया? Cos alpha plus बीटा हो जाएगा. हाँ हो जाएगा, लेकिन एक चीज और होगी, एफ जब ये ए होगा तो ये माइनस हो जाएगा. करेक्ट और नॉट? So we take a look at this. When we do the derivation, what is going to happen? We have seen in both the cases the angles are changing. एक बार इस तरफ को, एक बार उस तरफ को. When we do the derivation, again 2 स्टेप का है, उससे ज्यादा नहीं है. When we do the derivation, we are going to see that a new component in the formula is getting added up. That is 1 by cos beta. बाकी सारा वही है, बाकी सारा वही है, पहले वाला 1 by cos beta ऐड हो जाता है. So I want you to write down this derivation, how it is happening. Sir, but in Janus configuration, in the slide, we have read that it reduces the effect of trim, rolling, and pitching and side loads. Very good. So right now we are saying कि change हो रहा है ना? 1 by cos beta से कुछ का इफेक्ट आ रहा है. Yes. Correct? Sir. यही डाउट है कि भाई हमने कहा कि उसका इफेक्ट हटा देता है जेनस कॉन्फ़िगरेशन, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं, इफेक्ट तो होता है. Yes, तो sir. अभी हम स्टडी कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू स्टडी कि अगर ये इफेक्ट है तो कितना है. वी आर स्टडिंग कि हाउ द ट्रिम इज नॉट प्रोड्यूसिंग सो मच ऑफ रिजल्ट्स, नॉट प्रोड्यूसिंग सो मच ऑफ एरर. The error which is being caused is not so much that we should be worried कि जहाज चल रही है 15 नॉट पे और दिखा रहा है 10 नॉट, ऐसा चेंज नहीं होता है. तो हम लोग वही स्टैब्लिश कर रहे हैं कि ट्रिम के केस में जो इफेक्ट होता है, इट इज नॉट सो ग्रेट दैट शुड वरी अस.
वी आर मेकिंग श्योर कि हाँ जब ट्रिम होगा तो फर्क तो पड़ता है, लेकिन कितना पड़ता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. Okay. So in the bottom part we are seeing that actual speed v is the indicated speed which was this divided by cos beta. जो actual speed है that will be equal to the indicated speed जो स्क्रीन पे दिखा रहा है, जो डिस्प्ले में दिखा रहा है, उसको हम cos बीटा से डिवाइड करेंगे तो वो होगी हमारी एक्चुअल स्पीड. So I want you to also note down this derivation. याद है, this was the original formula for Janus configuration. इसको एक स्टेप पहले लेके जाएगा, हम लोग जाएंगे. तो this was the case, correct? Remember from Janus configuration ये इक्वेशन आया था या नहीं? यस सर. आया था. लेकिन अब हमने देख लिया कि इसका कोई काम नहीं होता है तो इसको हम छोड़ देंगे. So we will have only this. हम लोग साइन कंपोनेंट को छोड़ देंगे, उसके ऊपर माथा नहीं अपना खराब करेंगे, सिर नहीं खराब करेंगे. So when there is first case we are talking about when there is trim by stern, फॉरवर्ड ट्रांसड्यूसर में ये पार्ट होगा. Observe that here we have got angle, only angle change हुआ है, बाकी से सारा तो वैसा ही है. फॉरवर्ड में अल्फा माइनस बीटा हो गई थी. So this we take as equation number 1. Similarly, for aft transducer, it will be this. Keep noting down also, साथ में. You can write the heading effect of trim on the displayed speed. Case 1, when the ship is trimmed by stern or down by stern. So ये दोनों में फॉरवर्ड ट्रांसड्यूसर लिखा हुआ है. ओ गलती हो गई, माफ कर दो, ये आफ्ट है. दैट इज आफ्ट, कॉपी पेस्ट में रह गया. रिमेंबर दैट ओनली डिफरेंस इज हैपनिंग इन दिस टू केसेस. फॉरवर्ड में अल्फा माइनस बीटा हो गया और आफ्ट में अल्फा प्लस बीटा हो गया, जो हमने डायग्राम में देखा था. Are we good here? yes. नेक्स्ट स्टेप क्या था, जब हमने दो इक्वेशन निकाल लिए थे, अगला स्टेप क्या किया था हमने जेनस कॉन्फ़िगरेशन में? Subtracted. Subtracted. Exactly. So we will do the subtraction. तो LHS में FT कैंसिल हो जाएगा. हमने 2VFT/C को कॉमन ले लिया, यहाँ पे दोनों इक्वेशन में वही है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया. अरे क्या होता है,
ये हमने कॉमन ले लिया, बच गया क्या हमारे पास, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा। हम तो माइनस कर रहे थे, ये प्लस कैसे आया? सर माइनस का 2VFT cos अल्फा प्लस बीटा। हाँ, -2VFT है ऊपर वाले में, सेकंड इक्वेशन में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। गुड। नाउ cos अल्फा माइनस बीटा एंड cos अल्फा प्लस बीटा को हम रिजॉल्व कर सकते हैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, which is like this. Cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta। जहां पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस। तो प्लीज डू दिस फेवर टू मी, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए बाय प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ दिस हियर एंड दिस वन एट दिस प्लेस। cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यूज प्लेस कीजिए एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। What do you say? So 4VFT cos alpha cos beta divided by C. C। तो यहां से अगले स्टेप में आप b को एक तरफ लेके जाएंगे, बाकी फैक्टर्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो v का वैल्यू निकल आएगा। यस सर। और वही होगी हमारी फॉर्मूला जिसमें हम देखेंगे कि इंडिकेटेड स्पीड बाय cos बीटा आ जाता है। So we'll take this up in the second class after lunch when we have the, I think just after lunch we have another class। तो उसमें हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे इस पार्ट को ट्रिम के केस में, and then we'll take the topic forward। ठीक है? Okay, sir. Thank you. So anyone having any difficulty so far? नहीं सर। नहीं सर, थैंक यू सर। ठीक चल रहा है? सही? थैंक यू सर। चलो, okay, then we'll meet again after lunch 2:30 पे मिलते हैं, then we'll take it forward। बाय Bye-bye। सर। बाय सर। Have a great day। थैंक यू सर। Bye bye।